Good morning, everyone. So we'll start with our lecture. Last time जहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया था एंड थोड़ा ज़्यादा गैप भी हो गया हम लोगों का. I hope at least once you guys have revised the lecture which we have discussed last time. So we were discussing Unit 2 और लास्ट टाइम मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर बताया था एंड उसके क्या यूज़ हो सकते हैं, उसमें क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, उसके क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं. वी आर डन डिस्कसिंग ऑल दिस पॉइंट्स. सॉरी. So now we'll continue with our topic, that is Unit 2 only. As you can see, we have this uh, Unit 2 ka we are done discussing about the SCM policies, and उसके अंदर we have done discussing about the service portfolio. So in service portfolio आपके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, पाइपलाइन, कैटलॉग एंड रिटायर्ड वन आएगा, है ना. तो ये तीन पोर्टफोलियो क्या थे ये हम लोगों ने देख लिया था. दिस वाज द लास्ट टॉपिक आई थिंक विच वी हैव डन. इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज द प्रोसेस एक्टिविटीज. सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक्सप्लेन एससीएम प्रोसेस एक्टिविटीज. सो नाउ द सर्विस कैटलॉग मतलब विच आर द सर्विसेज विच वी आर प्रोवाइडिंग हियर इज द सबसेट ऑफ सर्विस पोर्टफोलियो, है ना. Subset of service portfolio matlab we are providing so many services like in MS Team as well. Microsoft provides you so many services, but it doesn't mean that we are going to occupy or we are going to access all the services. नहीं, हम लोग उसमें से selective which is required as per our needs, सिर्फ वही हम लोग यहाँ पे check करेंगे. क्लियर है. एंड आई थिंक हम लोग थोड़ा बहुत भूल भी गए रहेंगे अब तक हम लोगों ने जो किया था. सो अगर हम लोग क्विकली अगर एक बार वापस अगर रिवाइज भी कर ले, सो आपको यहाँ पे सर्विस पोर्टफोलियो जो मिलता है इन एससीएम या सर्विस पोर्टफोलियो या सर्विस कैटलॉग. सो सर्विस कैटलॉग इज अ सबसेट ऑफ सर्विस पोर्टफोलियो. देखो सबसे पहले तो ये दिया है सर्विस, हम लोग के पास पोर्टफोलियो है. ओके, सर्विस पोर्टफोलियो क्या होगा अभी वो आपको समझना है. सर्विस पोर्टफोलियो, व्हाट वी मीन बाय सर्विस पोर्टफोलियो, क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, वी सपोज टू रिमेंबर दोज थिंग्स फर्स्ट. ओके, अगर आपको सर्विस पोर्टफोलियो अगर नहीं समझेगा तो फिर हम लोग के आगे के जो पॉइंट्स है ना वो क्लियरली नहीं समझेंगे. ओके, सो एक बार हम लोग वो सर्विस पोर्टफोलियो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो आपको याद नहीं होगा, आई नो. सो वी कैन क्विकली जस्ट रिवाइज सर्विस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट when we talk about like ITSM क्या होगा. एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सर्विस पोर्टफोलियो का. Hello there. I'm Mr. Demand, and I'm dealing with all new IT projects. Hiya. The IT factory. Projects. Hello there. I'm Mr. Demand, and I'm dealing with all new IT projects. Hiya. I'm Mr. Supply, and I'm responsible for the IT factory. What's with the box there, Mr. Demand? Well, the Demand organization uses the IT portfolio to govern, manage, and monitor new IT projects. You see, 30% of the overall IT budget goes towards new IT initiatives, and we like them to be real investments. So, this is how we manage our business demands. This here is a business project with low risk, but great business benefits. So it's a good business investment. And this one here, well, it's got medium level risk, but it's got great alignment with the overall business strategy. So it's a good investment as well. And this, well, that's a very risky project. And it's got very little business value. So we just decided not to do it at all. You know, for us, IT projects are like business investments. We look at the business benefits, the risk,
the costs, the overall alignment with the business strategy. You know, this portfolio thinking really has improved our business relationship. We don't talk about the cost anymore, but we talk about the business value of our projects. What's your box for? Well, this, I use it for running the IT factory. With this box, I manage and service the networks, the database, the hardware, software, applications, and security. Okay, so that's where the remaining 70% of the IT budget goes to. But what does your box actually do? Like I said, it delivers a whole set of IT services. Look, these are our infrastructure services. They keep the systems up and running. And how much do they cost? I don't know. I can tell you how much the whole box costs. You're hardly thinking outside of the box, are you? Look, that's our database services. Oh, and here comes the application services. Those little guys. But how do you know your customers even need these services? I mean, do you even know what's inside your own box? No, I don't, and I don't need to. It's a bit like a box of chocolates. You never quite know what you're going to get. I think you'll find it's a completely different ballgame when you have to explain all this to your customers. How can we unlock this black box in IT? On the demand side, we use the concept of project portfolio management. This allowed us to optimize the investments we make in IT. The various investments in IT can be matched against the enterprise strategy of the organization, and therefore we can focus on the really high impact projects in IT. Great, brilliant. What about the supply side? On the supply side, we can introduce the same type of portfolio thinking, and this is called service portfolio management. This brings the running costs of IT in tune with the cost reduction objectives for your organization. The bottom line is simple. It turns the fixed cost of running IT into a variable one. Great. Here are some tips on how to get started. The best approach is really a bottom-up approach. That means that the first thing you have to do is get a grip on the full cost of your IT services. And don't think silos. Think about life cycle as you move along. And the CMDB probably is the best place to do exactly that. Secondly, you want to see the services in a business context. What it means is that you expose them in a service catalog and then link the different business processes to the services in the catalog. Then we bring in the users. Let them rate the importance of the business services. It means that you can focus on those with high business benefit and then source those with little business benefit. This is the trick to turn fixed costs into a variable one. So finally, this is about bonding with the business. This is not a one-time thing. This is a regular thing that you have to do. You have to sit down with the business stakeholders. You have to discuss the services pipeline, review the cost benefits of the existing services, and then make the right decisions on the buy, source, or retire of services. So with service portfolio management, you can unlock this black box of IT and put IT assets and services into a business context and bring value into a cost equation. Now you're ready to transform a black box cost center into a customer-focused service provider. सो एज यू कैन सी यही हम लोगों का मेन काम है, वही आज हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है डिटेल में, कि यहाँ पे ये जो आइडियाज है, ये आइडियाज के साथ में ये जो ब्लैक बॉक्स है, मतलब वी हैव आईटी सर्विसेज, वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल, बट हाउ टू यूटिलाइज दिस इन अ मोस्ट efficient way so that it will benefit this business in a most perfect way, or we can say utilize this black box resources in a most efficient way so that this idea gets more and more successful when we implement it for the success of our business. तो दिस आर द आइडियाज, बराबर है, और वो आइडियाज इंप्लीमेंट ये ब्लैक बॉक्स के बिना नहीं होंगे. सो ये ब्लैक बॉक्स को एफिशिएंटली यूज करना, उसके रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना,
सो दैट वो रिसोर्सेज जो है वो ओवर यूटिलाइज ना हो या अंडर यूटिलाइज ना हो, या फिर आपका बजट कुछ अलग है और आपके रिसोर्स यूटिलाइजेशन अलग है, ये मिसमैच नहीं होना चाहिए. सो फॉर दैट रीजन वी रिक्वायर्ड दिस पार्ट. ओके, सो यहाँ पे आपको देखो वही बोला सर्विस कैटलॉग. सर्विस कैटलॉग, अब ये सर्विस कैटलॉग क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने वीडियो में जो ये मल्टी कलर बॉल्स वाला जो बॉक्स देखा, दैट इज आवर सर्विस कैटलॉग. ठीक है, दिस इज आवर सर्विस कैटलॉग जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज है. लाइक वी हैव डेटाबेस सर्विस एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल. और ये सारे सर्विस कैटलॉग को क्लाइंट सर्विस के लिए आप कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज करेंगे उनके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना. सो इन दिस ब्लैक बॉक्स वी हैव मल्टीपल थिंग्स अवेलेबल. उसमें से कौन सा सर्विसेज हाउ यू आर गोइंग टू यूज फॉर विच पर्टिकुलर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, वो आपको देखना है. तो सर्विस कैटलॉग इज अ सबसेट ऑफ सर्विस पोर्टफोलियो. Most of activities are executed in collaboration with the service portfolio management. Now service catalog में क्या आ गया, agreeing and document of the service definition, description of each service which all relevant parties means we are talking about the client side, कहाँ पे कौन use करेगा, कैसे use करेगा. Now definition and descriptions are incorporated into the service catalog before deployment of the service in live environment. लाइव एनवायरनमेंट मतलब कहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली उसको यूज करेंगे, क्या पर्पस के लिए, एज साइमल्टेनियसली विद द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज. अब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एज वी नो इट माइट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बराबर है. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव सम ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज. अब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज जो है ये हम लोग को कैसे पता चलेगा कौन से है वो, और उसका बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो पाएगा. ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज के बेस के ऊपर आप कैसे बिलीव करेंगे कि आपके पास क्या चीजें हैं और उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज इन अगर ITSM अगर हम लोग देखें, सो वहाँ पे हर किसी के अलग अलग अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज रहेंगे. अब एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें उस पे, तो वी माइट बी हैविंग लाइक लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस. उसके बाद में आपको थियरी प्रॉपर समझेगा. So some standard policies are basically created for from the organization side कि okay, अगर हम लोग कोई XYZ टाइप का प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं तो हम लोग उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे. तो अगर मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल अगर बताऊं, ओके, वो एक प्रॉपर एग्जांपल नहीं था. विल जस्ट हैव अ लुक एट दिस वन. ध्यान से देखो, फिर थियरी आप इजीली लिंक कर पाएंगे. A key concept in both ITIL and DevOps is continual improvement. ITIL practitioners focus on delivering value through beneficial outcomes, while DevOps practitioners focus on improving technical practices that deliver value to the customer. Services and products are deeply intertwined, and thus both ITIL and नाउ एज यू कैन सी, ये जो है हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. अगर आप यहाँ पे देखोगे, services and products are deeply intertwined.
एज यू कैन सी जहाँ पे हम लोगों के पास वी हैव आईटिल, मतलब जो मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहा है, जो वैल्यू आउटकम दे रहा है इन अ कॉस्ट बेनिफिशियल वे, रिस्क मैनेज करेगा, और ये सर्विस लाइफ साइकिल है वो चलते रहेगा, मतलब इंप्रूवमेंट होते रहेंगे। और उसके साथ में आपको टेक्निकल प्रैक्टिसेस मतलब आपको अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग कोई डेवलपमेंट्स जो है उसको और बेटर बनाना पड़ेगा, बराबर है ना, ये सब अब काम आएगा। तो ये जब दोनों साथ में चलेंगे तब आपके लिए एक बेस्ट डील होगा आपके बिजनेस के लिए। तो वो देखो मैंने एक फोटो जो है वो सेम पेस्ट किया है, आपको वो याद रखना है। नाउ कंटिन्यू विद दिस पार्ट। Common goal, delivering value to the customer. Meet Oscar, head of the products team at his organization. To create value in his team, the main question he should be asking is this: do my team's methods or capabilities align with the service team's methods or capability? For example, is the development team's approach to testing and release of software aligned with the service team's approach to testing and releasing service updates? Similarly, is the operations team's approach to technical event and capacity management aligned with the service team's approach to service event and capacity management? Service operations is generally about monitoring service health, resolving customer issues and queries, provisioning access based on security policies, and managing service events. There should be a flow of updated knowledge into the service organization so that service operations can assist customers and provide value quickly. In turn, service operations can escalate issues, provide more information about common issues and complaints, and monitoring trends. This information should act as a feedback loop that will help developers and technology operations team improve their own capabilities and processes. But what about the upstream service capabilities? In ITIL, the service design phase of the service lifecycle defines policy and requirements around service performance. It works with the business to define aspects of the service, such as service levels, event management, and capacity management. We need to ask 3 questions. Firstly, is the development team able to receive service characteristics quickly and easily? And is the development team able to feedback performance information so that service design can continually improve? Similarly, is the technical operations team able to feedback the right metrics and reports? Ultimately, the business is trying to provide value to customers and gets feedback in terms of revenue and market share. But in order to interact with the customer in this way, the organization needs to ensure that service and product value streams are aligned. So as we start to put these links together, we end up with a very neat loop where the business defines the vision or goal of the service and the service organization defines the service components. From there, they then tell the development and operations team what the required outcomes need to be. Development and operations provide the technical solutions that enable the service organization to operate the service, thereby delivering value and outcomes to the customer. And there's a reverse feedback loop all the way back up this chain as well. ITIL provides a framework to continually deliver customer value through services using people, partners, processes, and products. DevOps focuses on the continual delivery of value via the product. By aligning the two concepts, organizations can not only build superior products, but superior services as well. ITIL practitioner is an excellent concept. Organizations can not only build superior products. ओके, सो बेसिक हम लोगों ने क्या देखा कि आपको कंटिन्यूअस सर्विस इंप्रूवमेंट की ज़रूरत रहती है। देखो मैंने एक इमेज जो है वो पोस्ट किया है जो इम्पोर्टेंट है। 2 पॉइंट्स हम लोगों ने डाला है। एक तो वो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट था, हम लोग को उससे लेना देना नहीं है, बट हाँ हम लोग के पास
कंटिन्यूअस सर्विस इंप्रूवमेंट का स्कोप होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस सर्विस इंप्रूवमेंट का अगर स्कोप नहीं हुआ तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि हम लोग जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे वर्कआउट हो रहा है, वो हम लोगों को हेल्पफुल है या नहीं है। इसके इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में कभी पता नहीं चलेगा प्रॉपरली। सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपके जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसको कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज करेंगे, और वो अभी जो वे में काम कर रहा है वो हम लोग के लिए कितना काम का है ना। अगर हम लोग के लिए वो अगर कहीं पे प्रॉपर काम का नहीं है तो हम लोग उसको और मॉडिफाई करने की ट्राई करेंगे। मॉडिफाई मतलब क्या है कि हम लोग उसको और बेटर वे में यूज करने की ट्राई करेंगे। और वो बेटर वे में यूज कैसे कर पाएंगे हम लोग, तो बेटर वे में यूज करने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं उसमें सर्विस सेक्टर्स जो हम लोग के सर्विस डिजाइन जो है उसके ऊपर आपको और वर्कआउट करने की जरूरत पड़ेगी। उसके वर्कआउट करने का मतलब आप कनेक्ट करो कि ओके हम लोगों ने क्लाइंट को ये वे में सर्विस किया, उसके अंदर आपको ये वे में हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट्स किए, चेंजेस लाए, है ना। ये सारे पॉइंट जो है हम लोग वर्कआउट करेंगे जिससे आपको और बेटर नॉलेज मिलेगा उसका। अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं कि ओके कहाँ पे हम लोगों को कैसे आपके सर्विसेज को और मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो अब देखो कि वो सर्विस मेंटेनेंस के अंदर ऐसा नहीं होगा कि हमेशा हम लोग एक बेटर वे में डेवलपमेंट्स ही करते रहेंगे। नहीं, आपके पास और बहुत सारी चीज़ों का फोकस या एस्पेक्ट होता है जब हम लोग अगर सर्विस की बात करते हैं। सो अब सर्टन लेवल पे हम लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि वो सर्विस लेवल एग्जैक्टली कैसे काम करेगा। ओके, सर्विस लेवल एग्जैक्टली काम कैसे करेगा, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले समझते हैं जो आपको इजीली बताएगा कि सर्विस लेवल काम कैसे करेगा। ओके, जहाँ पे हम लोग ITSM और जो हम लोग के सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का पावर है वो कंबाइन यूज करते हैं। वर्कआउट कैसे होंगे ये चीजें, ध्यान से देखो एक मिनट। What is DevOps? DevOps is one of those terms where everybody has a slightly different definition. For example, Amazon says DevOps is the combination of cultural philosophies, practices, and tools that increases an organization's ability to deliver applications and services at high level. अब देखो यहाँ पे आपको एक पॉइंट बोला गया है कि हम लोगों को क्या करना है, मतलब ये कंपनी है जो एक्चुअल में वो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे काम कर रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, कल्चरल प्रैक्टिसेस, कल्चरल फिलोसॉफी, प्रैक्टिसेस एंड टूल्स दैट इंक्रीज एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू डिलीवर एप्लीकेशन एंड सर्विस एट हाई वेलोसिटी। जहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस की जरूरत है, कंपटीशन ज्यादा है, वहां पे आपको कोई एक चीज बेस्ट वे में प्रोवाइड करना है जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, है ना, उनके कल्चर के हिसाब से हम लोगों ने सेटल आउट किए हुए हैं वो। अब याद रखो द प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विस, उसके लिए आपको वहाँ का कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशंस समझना बहुत जरूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट सोशियो टेक्निकल एस्पेक्ट of your service of your system. So if Facebook provides you or Amazon provides you a service, and for providing that service they basically first research the things with respect to socio technical aspects of that place or that country जहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि दिस प्लेस सेलिब्रेट्स दिस आर डिफरेंट फेस्टिवल्स जहाँ पे वो सेलिब्रेशंस ये वे में होते हैं, एंड दे कैन gift each other this type of a product or a material, or as per the religion of Hindu or Muslim or Sikh या जो भी है, they basically use or demand this type of a product during their festivals, है ना। तो वो उनके रिलीजन, उनके कस्टम्स क्या है, और उसके हिसाब से अगर आपको वो सर्विस अगर उनको प्रोवाइड करना है तो विच टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस वी शुड प्रोवाइड दैट, जो उनके रिलीजन में या उनके कल्चर में या उनके कस्टम में अवेलेबल है, एंड व्हाट थिंग्स आर नॉट अवेलेबल और विच आर नॉट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन देयर रिलीजन, वो आपको वहां पे ऐड नहीं करना है।
otherwise the crowd might go against you. जैसे आप देखो कि इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, वो बीफ मीट का बहुत इशू चलते रहता है. सो अगर गलती से भी इफ सम कंपनी कम्स हियर और वो अगर बीफ मीट जो है वो अगर सेल करना चालू करेगा, तो कस्टमर में पॉपुलैरिटी बढ़ने के पहले ही वो बैंड हो जाएगा. It doesn't mean it is not like कि इंडिया में we don't have people who eat meats. लेकिन अगेन एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई यहाँ पे, अभी हम लोग के यहाँ पे कोई एक पॉइंट चालू हुआ है जहाँ पे वी आर बैनिंग द बीफ मीट हियर, है ना, और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू हो गया. तो आपको ये याद रखना है कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विसेज में कभी भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना हो, कि वंस द पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व आपका बिजनेस स्पॉइल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें रिटर्न आने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे. एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, आप देखो कि एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि वी हैव टिकटॉक, दैट इज द एग्जाम्पल. अब वो खुद से इन्वॉल्व नहीं हुआ है, दो कंट्रीज के पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व हो गया. इट वाज प्रोवाइडिंग सम सर्विस, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट्स को पता नहीं था कि दैट applications or one specific application belong to China and it is basically handled by which company. और आप देखो कि अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि सालों से गवर्नमेंट जो है from years, this is not the thing of 2 or 3 months or 6 months. तो हम लोग के पास बैक एंड में सिक्योरिटी एजेंसीज रहते हैं, आईटी स्पेशलिस्ट एजेंसीज रहते हैं, who are keep on working and monitoring the different applications which are running in India और विच आर बेसिकली सेटलिंग डिफरेंट बिजनेसेस इन इंडिया. तो वो इंडियन के कौन से डेटा को यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, किसके साथ शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें. ऐसा नहीं है कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तभी हम लोग रिसर्च करना चालू करते हैं. दिस एनालिसिस आर ऑलरेडी देयर इन द पिक्चर, बट सडनली जब आपको अगर कोई पॉइंट्स के ऊपर अगर देखना है तो वो टाइम पे आपको वहां पे सडनली ये पॉइंट आता है कि ओके दिस एप्लीकेशन बिलोंग्स टू चाइना और उनके ये कंपनीज जो है वो चाइनीज कंपनीज है एंड दे आर शेयरिंग देयर डेटा विद द चाइनीज गवर्नमेंट. तो इतने सालों से जब वो रन हो रहा था तभी आपको पता नहीं था क्या? गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो इट मीन्स कि आपको वहां का कल्चर, ट्रेडिशन और सिस्टम्स अगर प्रॉपरली पता है एंड आप अगर वो कंट्री के पॉलिटिक्स में अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो आपका बिजनेस, आपका सर्विस बहुत हेल्दी चलेगा. लाइक आप अगर देख सकते हैं कि द फेसबुक, गूगल, आप देखो दे नेवर पार्टिसिपेट एक्टिवली इन पॉलिटिक्स ऑफ एनी कंट्री. आपने कभी भी फेसबुक या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, we do have Indians working in such companies, but आपने कभी भी देखा नहीं रहेगा कि they participate in politics. So they try to improve their services. Definitely they try to improve the services. Same thing was done by TikTok as well. In US also they were following the same thing, but suddenly वो political part का issue बन गया and rest other things just went to a dustbin and suddenly issue जो है वो change हो गया. Getting now देखो again US allowed TikTok, but India we are still not allowing the TikTok because now the government represented one software or a service in such a way that using a TikTok it's against our nationalism. So once someone connect things with the nationalism, आप कितना भी अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर दो वो नहीं होगा. So for that reason, as you can see, as you can read here, कि वहां पे आपके organizational ability and उसके साथ में cultural philosophy and practices. So we must assure about what things are providing and what way we are providing. वो one or the other way लोगों के sentiments hurt ना करें, उनके cultural जो values है उनको respect करें, and as well as it should be never interfering or connecting anywhere with the politics of that place so that we can easily run with our business. We can take example Amazon, Facebook, this all are the big brands and they never interfere with the political parties. ठीक है, Facebook once tried this.
आपने सुना रहेगा internet.org नाम का प्रोजेक्ट was about to launch in collaboration with Jio and Facebook. So the concept was like Facebook will launch one internet.org, and non benefit type of a website where people can upload their different educational courses, videos, materials and everything. And this course, this video materials and everything will be provided at rural areas where people will not get where people are not getting enough access of internet, and because of which they are not getting enough education which is required to develop their skills. सो जैसा हम लोगों का इंडिया का स्किल डेवलपमेंट मिशन है, जहाँ पे वी प्रोवाइड अ बेसिक स्किल्स टू ईच एंड एवरी इंडियंस थ्रू विच दे कैन एटलीस्ट acquire some or the other businesses or a profession through which they can earn for their livelihoods. So exactly same techniques or same thinking was developed during this project as well. Internet.org was the live website, and the thing was like if you are trying to access the internet.org website with Geo's card, Reliance Geo's card, then without a data also you can get the access of all the material which is available there. You don't require any data pack. That website belongs to that website was accessible free of cost to everyone. So whoever wants to skill up, they whoever wants to learn something new, or if they want to improve their skills, then they can just directly visit to this place. And Facebook was committed like we will not be putting any advertisement, or we will not be exploiting this thing for our commercial benefits. So but ये इसके बाद में the main problem was कि if internet.org will be provided free of cost from Geo site, then most of people will be diverted towards Geo only. बराबर है, बिकॉज ऑलरेडी जियो ने फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करके मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो कैप्चर कर लिया था. एंड इफ अगेन दे आर कोलैबोरेटिंग विद फेसबुक, तो अगेन क्या होगा, एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो है वो वहां पे कैप्चर हो जाएगा. देन अदर कंपनीज रेज द इशू ऑफ नेट न्यूट्रलिटी. नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? if you are providing one website for a free of cost, then you should provide other websites also for the same way. if you are providing one website, if you are जैसे internet.org, मेरे पास डेटा पैक नहीं है, still I'll be able to use that website. एंड यूट्यूब या ऐसे कोई दूसरे जो साइट्स है जहाँ पे एजुकेशनल वीडियोस आपको वहाँ पे भी मिलेंगे, बट फॉर एक्सेसिंग दोज वेबसाइट्स आई नीड अ डेटा पैक. सो ये क्या हो गया, नेट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो गया, वेर वन एट वन प्लेस आई डोंट रिक्वायर एनी डेटा पैक और एनी रिचार्ज और एनी इंटरनेट डिफरेंट इंटरनेट प्लान्स, but for accessing other websites I do require that. So ये imbalance हो गया getting, and this imbalance was started from US itself, and then that is inherited in other countries as well. So basically क्या होता है, sometimes a big business brands to provide or to just to for a business beneficial purpose, or in a competition to make themselves better compared to their rivals, वो कहीं ना ये नेट न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल को वायलेट करता है. लाइक let's take an example. We have two websites, okay. One is Facebook, and okay, let's take an example, like one is Amazon and one is Flipkart. ठीक है. Amazon is basically connected with Jio, Airtel, Vodafone, all this main big brands जो आपको ISPs है, ये हम लोग के जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं. And Amazon paid some extra money to Airtel, Jio and Vodafone, and Amazon requested this three ISPs, internet service provider, कि you provide some extra bandwidth for Amazon and reduce the bandwidth of Flipkart. तो क्या होगा, when I try to access a Flipkart from my 4G connection, it will take a time to load that application, and when I try to access Amazon for online shopping, वो fractions of seconds में या 2 seconds में that website will be available on my mobile or on my laptop.
सो क्या होगा, इफ सम वेबसाइट्स आर रनिंग स्लो, मैं वहां पे कोई अगर मनी ट्रांजेक्शन करने की भी ट्राई करूंगा, इफ आई ट्राई टू परचेस एनी प्रोडक्ट एंड अगर बैंडविड्थ अगर स्लो है, तो क्या होगा कि मैं जब मनी ट्रांजेक्शन करने की ट्राई कर रहा हूँ, इन बिटवीन दैट विल गेट हैंग्ड और दैट विल गेट स्टक इन बिटवीन, सो मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा नहीं, आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू ऑर्डर एनी प्रोडक्ट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, सो एट द एंड आई लेफ्ट आउट विथ ओनली वन ऑप्शन, दैट इज Amazon. सो ज्यादा बेनिफिट किसका होगा इसमें, Amazon का होगा, एंड लॉस किसका होगा, फ्लिपकार्ट का होगा. सो दिस आर द टेक्निक्स जो बिजनेसमैन जो है वो यूज करते हैं. एंड सेकेंड जो होता है वो पॉलिटिक्स यूज करते हैं. पॉलिटिक्स आर वेरी डेंजरस फॉर आर सर्विसेज आईटी सिस्टम्स. इसके लिए आपको कहीं पे भी हम लोग बता दें कि वहाँ का कल्चर समझो, वहाँ के लोगों को समझो, और उसके बेस के ऊपर भी ट्राई टू प्रोवाइड और डिजाइन आर सर्विस कैटलॉग. नेवर इन्वॉल्व पॉलिटिक्स with your software, otherwise it will badly hamper you. आप कितना भी बेस्ट, टिकटॉक कोई फॉल्ट नहीं था, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर उसका कोई फॉल्ट होता था तो इतने सालों तक टिकटॉक चलता नहीं था. ऐसा नहीं है कि 2 दिन में जब से हम लोग के बॉर्डर इशू हुए तब से ही टिकटॉक डेटा चोरी कर रहा था, या वो चाइना को प्रोवाइड कर रहा था, या दे वर डीलिंग विद समथिंग और द अदर थिंग. कभी कोई एक कंपनी अगर चालू होता है तो उसको वो कंट्री के आईटी रूल्स लॉज जो है, जो हम लोग ITSM में अभी पढ़ रहे हैं, जो साइबर लॉ में हम लोग पढ़ते हैं, आई थिंक आपको साइबर लॉ नहीं है, तो वहां पे वो कंट्री को वो रूल्स बहुत प्रॉपरली फॉलो करने पड़ते हैं. एंड एवरी ईयर वी हैव वन ऑडिटिंग टीम जो इसको मॉनिटर करता है. सो आप देखो कि अगर आज हम लोग के यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, दैट्स व्हाई फेसबुक, गूगल, दिस ऑल कंपनीज आर नॉट स्टीलिंग एनी सिंगल बिट ऑफ इंडियन डेटा. But suddenly Chinese government started stealing those data and misusing against the Indian people and monitoring our activity on using this data. So अगर हम लोग का कल अगर यूएस के साथ रिलेशन खराब हो गया तो फिर तो हम लोगों का हर एक सिंगल एक्टिविटी, आप किसके साथ क्या बात कर रहे हो, हर एक चीज यूएस के पास है. द व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, Amazon, गूगल, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यूएस. सो मतलब आपका टिकटॉक के पास जितना डेटा था उससे 100 टाइम्स ज्यादा डेटा यूएस के पास है with the help of this different applications. So ये issues तभी पिक्चर में आते हैं जब आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं. लेट्स टेक अ एग्जांपल, फेसबुक जो है उसको ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए. लाइक हम लोगों ने ये एग्जांपल देखा था कि यूएस में जब ट्रम्प इलेक्शंस थे वो टाइम पे फेसबुक वाज एक एप्लीकेशन, एक मोबाइल ऐप बनता है, ठीक है, एक ग्लोबल एनालिटिक नाम का कंपनी है. दे बेसिकली विद द हेल्प ऑफ थर्ड कंपनी दे डेवलप्स वन मोबाइल एप्लीकेशन, और वो मोबाइल एप्लीकेशन टाइम पास कुछ तो था. एंड आपने बहुत बार देखा रहेगा कि द मोबाइल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड्स योर परमिशन, मतलब आपका कॉल्स का, आपके फेसबुक के प्रोफाइल का, एंड द अदर सच डिटेल्स विच आर रिक्वायर्ड, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे सर्टन जो डिटेल्स है ना वो फेसबुक के पास से वो कैप्चर करेंगे, बराबर है. तो जब वो ये डिटेल्स कैप्चर कर रहे हैं ना, तो उसमें एडवांटेज क्या हो रहा है कंपनीज को, कि मैंने साइन अप कर दिया डायरेक्ट फेसबुक से, तो अभी मुझे अलग से कोई साइन अप डिटेल्स वहां पे फीड करने की जरूरत नहीं है ना. सो अब मैं वो डिटेल्स फीड नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऑल दोज डिटेल्स आर बेसिकली प्रोवाइडेड फ्रॉम द फेसबुक साइट. सो अब पॉलिटिकल कैंपेन्स के टाइम पे Trump, with the help of a global analytic company, they have developed a mobile application जो more than 5,000 US citizens have downloaded this, and उससे they are monitoring their activity on Facebook कि which type of post this people likes on Facebook, whether they are follower of a Trump or they are against the Trump. And based on this detail, Trump planned all their political campaigns. उन्होंने क्या मॉनिटर किया, ये जो भी लोग है whether they belong to which state of US, so उससे they can easily find out कि where we have more in which state, and of that state which area we have more followers for our party or for our the main campaign phase. तो उस वहां पे हम लोग ज्यादा पॉलिटिकल रैलीज प्लान करेंगे जिससे हम लोग के जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाए.
इफ यू नो द नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स कि आपको नंबर ऑफ सीट्स कहाँ पे से ज्यादा मिल रहे हैं और टोटल नंबर जो है आपको मैजिकल नंबर्स तक पहुंचना रहता है. सो हर जगह पे पॉलिटिकल कैंपेन्स करने जरूरी नहीं रहते. आई नो देर आर फ्यू प्लेसेस और फ्यू स्टेट्स या फ्यू एरियाज इन सम स्पेसिफिक स्टेट्स विच आर टोटली अगेंस्ट द ट्रम्प गवर्नमेंट. तो वो टाइम पे वहां पे हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. इंस्टेड विल ट्राई टू कन्विंस मोर जहां पे हम लोग के साइड पे ऑलरेडी लोग है. द सेम थिंग इज एप्लीकेबल, द सेम थिंग वाज अप्लाइड हियर एज वेल. अब पॉलिटिक्स चालू कहाँ से होता है? ग्लोबल एनालिटिक वाला टेड टॉक टाइप शो में आता है एंड देयर ही ट्राइज टू जस्ट प्रोवाइड दिस थिंग कि विद द हेल्प ऑफ जैसे ITSM सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दे विल लाइक कि ये सेम जो टेक्निक्स है इसमें जब अगर हम लोग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऐड कर देते हैं तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई चीज अगर मैं आपको 10 बार बताता हूं तो यू विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन दोज थिंग्स. सो एग्जैक्टली सेम वे पॉलिटिकल कैंपेन्स जब सोशल मीडिया के थ्रू चलते हैं तो वी आर यूजिंग दिस सर्विसेज एंड वी provide or we plot things in such a way कि आपको the people who are there on Twitter or Facebook they start believing on those things. Exactly same thing happened with TikTok. Exactly same thing happened with PUBG. इसके पहले भी PUBG चल रहा था, इसके पहले भी TikTok चल रहा था. वहां पे भी आपको बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी मिल रहे थे. सडनली वेव चेंज्ड. That is not because of data, they are stealing the data. That was because they are basically stuck in politics. Because of some or the other reasons. ठीक है. Same thing happened with global analytics. उन्होंने गलती से बोल दिया कि भाई they are actually actively participating in the politics क्योंकि उन्होंने political campaigns जिता करने के लिए ही बनाया था. लेकिन उन्होंने वहां पे जाके बोल दिया और पॉलिटिक्स चालू हो गया. सो एज पर देम जो वो मोबाइल ऐप बना था और वो जो लोगों ने डाउनलोड किया था उनका डेटा एनालाइज करने के बाद में ट्रम्प प्लान दे पॉलिटिकल कैंपेन्स जिससे उन्होंने वो एरियाज पे ज्यादा फोकस किया जहां पे उनके फॉलोअर्स ज्यादा थे एंड उससे उनका जीतने के चांसेस बढ़ गए. एग्जैक्टली सेम थिंग वाज फॉलोड इन इंडिया इन 2010 कांग्रेस इलेक्शन, 2008-2009 कांग्रेस इलेक्शन जहां पे कांग्रेस जीतता है. 2014 एक मोदी वेव जो चालू होता है उसमें भी ये सेम कंपनी ने हेल्प किया था. सो रिमेंबर बड़े कंपनीज के साइड से डेटा ये अलग अलग मोबाइल एप्स यूज होते हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कैंपेन्स में यूज होते हैं. 2016 में जब US इलेक्शंस का ये कंसेप्ट बाहर आता है सडनली आप कांग्रेस का ऐप प्ले स्टोर से डाउन जाता है, बीजेपी का ऐप के टर्म्स कंडीशन चेंज हो जाता है. गेटिंग एंड all are now normal, all are not dealing with any such thing. सब वो न्यूज बाजू में चले गया है ना. देन जब अभी कोई वापस कोई चीजें आते हैं तो अगेन आप देखो कि गवर्नमेंट जो है दे आर जस्ट बैनिंग वन और द अदर एप्लीकेशंस. अब अगर इतने सारे एप्लीकेशन आप देखो कैम स्कैनर में हम लोग सालों से वो कैम स्कैनर टाइप एप्लीकेशन यूज कर रहे थे ना, सडनली वो डेटा चोरी कैसे करने लगा. गेटिंग. सो ITSM जो है यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट्स पे फोकस नहीं करते. ITSM में वी ऑल्सो फोकस्ड ऑन सम अदर पॉइंट्स रिमेंबर, और वो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ और वही सेम चीजें आपको यहाँ पे ये वीडियो में भी दिखेगा. ठीक है, ध्यान से देख लो अभी. Velocity. Where everybody has a slightly different definition. For example, Amazon says, DevOps is the combination of cultural philosophies, practices, and tools that increases an organization's ability to deliver applications and services at high velocity. I like how this definition really emphasizes that DevOps involves combining a bunch of things that are necessary to deliver value quickly. Wikipedia says, DevOps is a software engineering culture and practice that aims at unifying software development and software operation. This definition really focuses on breaking down the barriers between development and operations. Here is my high-level definition. DevOps is what happens when everyone in a software delivery pipeline takes shared responsibility and uses their skills not only to do their own piece of the work, but also to optimize holistically for rapid and safe delivery of the final result.
An organization with a DevOps mindset is going to use their programming skills to automate the deployment process where it can be made more efficient. They're going to use their skills in operations to make sure that the developers and users have easy access to testing environments and servers, so automated and manual tests can provide feedback quickly. A DevOps approach to change management is going to put people from change management side by side with developers and operations to find ways to leverage automation to help guarantee quality. There are all kinds of tools and technologies to enable the automation and collaboration used by DevOps organizations, but none of these things are really important. What is important is the way DevOps teams not only produce software, but also use their skill to collaborate with everyone else to create and improve a comprehensive integrated system to deliver that software. So this is one thing. अब सेकेंड वाला अगर आप देखेंगे ये है, ध्यान से ये वाला देख लो, बाद में हम लोग वापस थियरी पे आता है, ध्यान से देखना. Meet Dave. Dave works for a company whose success is dependent on its ability to offer new and exciting products to its online customers, faster than its competitors. Dave is a developer who writes code for new products, new features, security updates, and bug fixes. Unfortunately, Dave needs to wait weeks for his work to be placed into production. This delay increases the pressure of staying competitive because some competitors are able to deploy new products and features much faster. In addition, this delay makes it very challenging for Dave to manage both the code that is pending to be pushed into production and the development of the next feature that he is responsible for producing. When Dave's code is finally deployed into the production environment, occasionally unforeseen errors or problems occur. This mostly happens because Dave is focused on writing code for his development environment, and it's not identical to the production environment. Meet Dave's coworker, Anna. Anna is a system administrator from the operations team. She is responsible for maintaining and assuring the uptime of the production environment. The number of servers that she needs to administer is constantly growing because her company continues to launch new products and customers are consuming more of their services. This increase of servers has caused some challenges for Anna. The tools that she used to administer a few servers are not as effective when used to administer a much larger volume of servers. This challenge affects how new code is deployed in her production environment. Usually, when new code is released, it takes a little massaging to fit into the production environment. This is why she requires code deployments to be scheduled and are only allowed once a month. Once new code is actually deployed, it's her responsibility to diagnose any errors or problems caused by these changes. Sometimes Anna feels as though the developers have tossed their work over the wall to her and her team. So, what can be done to help Dave and Anna work better? Ultimately, they want the same thing: happy customers. What if Dave the developer and Anna from operations worked better together, thought more alike, broke down silos, shared responsibilities? This would require them to change their mindset on how dev and ops work. So what is DevOps? DevOps integrates developers and operations teams in order to improve collaboration and productivity by automating infrastructure, automating workflows, and by continuously measuring application performance. If Anna and Dave's teams were more DevOps oriented, they would do a few things differently. They would place more focus on automation. DevOps teams try to automate everything, from testing of new code to how infrastructure is provisioned. They would write software in small chunks that are integrated, tested, monitored, and deployed, usually in hours, versus the traditional way of writing large chunks of software over weeks or months, and then do weeks or months of testing. Plus, they will have identical development and production environments based on the same configurations. Writing small chunks of code will allow them to increase the frequency of deployments and improve the time to deploy new code. It also enables them to adopt an iterative process to monitor, measure, and improve the code and operations every day. Improve their ability to respond to market needs or other things that impact software.
Instead of building and configuring software plus infrastructure manually on an ad hoc basis, Anna and Dave's teams would write configuration management code that describes how things should be built. As a result, they will have the ability to build infrastructure at scale to dozens, hundreds, or even thousands of servers in multiple locations using different types of hardware. Another change that a DevOps-oriented team would do is to use a source control system to help manage, track, and document all of the changes to both the application code and configuration management code. The change that Anna and Dave would implement is to adopt a discipline of application performance monitoring and optimization in almost real time. This will allow Dave and the rest of his developers to understand the performance impact of their changes. The ultimate goal is to have a production environment that gives their customers a great experience. So what benefit does having a DevOps-oriented team give Anna and Dave's company? Well, it allows them to increase the rate of software delivery and improves the company's time to market, potentially from months and weeks to days and hours. This will be a huge competitive advantage. It also allows them to maintain better business focus by automating their infrastructure so that they can focus on things that improve the business and their online content. They will spend more time on these activities that add more value to their organizations. When a company is able to build and offer better products, this means they have happier customers and happier developers. How does a DevOps-oriented team actually accomplish this? Well, as mentioned before, there needs to be a change in the mindset of the two groups that need to work closer together. The other component to the formula is getting the right tools. New tools are needed in this fast-paced world. They will need a tool that allows them to build and test code continuously. An example of this is Jenkins. They will need a tool for source control, such as GitHub. This will allow them to manage, track, and document all the changes to their application code and their configuration management code. They will need tools for configuration management, such as Chef, Puppet, and SaltStack. These tools will allow them to deploy applications in an automated fashion, maybe across hundreds or thousands of servers in different locations. They will also need new tools that allow them to continuously measure the performance of their environment and application. Generating, reading, and analyzing system logs is extremely helpful to monitor an environment. But now that many environments have hundreds or thousands of servers, new tools like New Relic are required to make sense of all this data. This will allow them to know how the entire application is performing and help them identify bottlenecks. But many companies don't know how to use these tools or do not have the skills to automate software delivery process. This is where Rackspace DevOps Automation Service can help. In conclusion, DevOps is a new philosophy that can help software organizations innovate faster and be more responsive to business needs. It promotes collaboration between developers and operations, which improves quality of software development and more frequent software releases. Adopting the DevOps philosophy requires a new mindset, new tools, and new skills. Rackspace can help. Learn more at www. ओके सो एक पॉइंट जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जब कभी अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ये कंपनी स्पेसिफिक था, बट दैट वाज अगेन हेल्पफुल फॉर आवर थियरी सब्जेक्ट एज वेल. सो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला, वी रिक्वायर्ड न्यू माइंडसेट, न्यू टूल्स एंड न्यू स्किल्स एज वेल. ये बहुत जरूरी है. ये तीनों को जब आप कंबाइन करते हैं तभी हम लोगों को एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मिलता है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे फर्स्ट थिंग क्या बोला है, वी आर सर्विस कैटलॉग मैनेजमेंट एक्टिविटीज. आपको क्या बोला है, सर्विस डेफिनेशन डिफाइन करना है. अब सर्विस डेफिनेशन इज गोइंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंडसेट, टूल्स एंड स्किल्स. ठीक है, जहां पे हर एक सर्विस हम लोग डिस्क्राइब करेंगे रेलिवेंट पार्टी के साथ में. अब रेलिवेंट पार्टीज कौन रहेंगे, वी हैव मल्टीपल सच पार्टीज एट डिफरेंट लोकेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज और इन डिफरेंट स्टेट्स. इसके हिसाब से ये जो पार्टी है इसमें डिफरेंस होगा. देन डिप्लॉयमेंट ऑफ द सर्विस इन द लाइव एनवायरमेंट as per the organizational policy.
अब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइंड रहेंगे कि हम लोग कौन से स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे, नेट न्यूट्रलिटी हम लोग फॉलो करेंगे, मार्केट में कंपटीशन में रहने के लिए सपोज मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, वहाँ का कल्चर को रिस्पेक्ट करो, ये सारे जो मैंने एग्जांपल्स दिए और साथ में हम लोगों ने जो कुछ वीडियोस देखे वो कंबाइन आएगा। उसके आगे क्या बोला, इंटरफेसिंग विद द सर्विस पोर्टफोलियो टू अग्री टू द कंटेंट ऑफ द सर्विस पोर्टफोलियो एंड सर्विस कैटलॉग। This includes the level of detail and attributes of the service that should appear in the service. Now, interfacing with the business relation management and service level to ensure that the information is aligned with the business and business process. बराबर है, ये याद रखो, it should be aligned with the business and the processes of the business. अब ये दोनों चीजें जो है वो साथ में नहीं हो सकते। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो डेवलप करके जो है वो क्या कर रहा है, एक तो डेवलपमेंट प्रोसेस अलग एक टीम कर रहा है और ऑपरेशन प्रोसेस एक दूसरा टीम कर रहा है, और ये दोनों जब साथ में सिंक्रोनाइजेशन में चलेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा ऑपरेशन कौन से प्लेस पे चल रहा है और वहां पे क्या नए डेवलपमेंट्स की जरूरत है एज पर द न्यू एनवायरमेंट, एज पर द न्यू स्किल्स, एज पर द न्यू टेक्नोलॉजी। सो एज आई सेड, प्लेस टू प्लेस आपके कुछ टूल्स टेक्निक्स जो है उसमें चेंजेस होंगे, जो वे हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं। सो सेम यहाँ पे होगा, द इंटरफेसिंग विद द बिजनेस एंड आईटी कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। बराबर है, जो आपके बिजनेस यूनिट्स रहेंगे, आपके बिजनेस प्रोसेसेस रहेंगे अलग अलग प्लेसेस पे, तो उसके लिए ये जरूरी है। नाउ द सपोर्ट टीम, सप्लायर एंड सर्विस असेट्स, ये सब साथ में काम करता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, एंड उसके बाद ही आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट्स, लेट मी नो। अभी जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, किसी को कोई भी डाउट है? यस, एनी डाउट्स गाइस, एनीवन? हेलो, जाग रहे हैं ना? हेलो गाइस? No, sir, no doubt. ओके, एनीवन एल्स? आंसर क्यों नहीं आ रहा है किसी के पास से? रेस्ट स्टूडेंट्स, हेलो गाइस? No doubt, sir. ओके ठीक है। So we'll just wait for 2-3 minutes, then I'll stop this lecture.